Hey guys, welcome back everyone to this free Python project series. So let's continue back our journey, guys, in the world of Python. So we are talking about some previous classes. We have seen about some operators, some few basics part of Python. Today we're gonna go and see some more details about the Python as a programming language, right? So let's go and jump back to the practicals. So today, let's just give me 1 second. I just want to open my command prompt. And in this folder, last class, we have created the folder into the documents folder. So maybe we can go into the documents directly here. And here we have created one folder of Python. So what is exactly the name of the folder? Was I think Python something we have created, Python 10 days, something this code folder. So what I want now today also, I want to save my same code inside the same folder. So I'm opening a new this exactly this same tab into the terminal. तो इसी tab को हम terminal में open कर रहे हैं. So guys can press right click and can go to the terminal over here. Right, and once you go and reach into the same folder, तो यहाँ पे इसका जो path है C user documents Python, whatever path we have it here, same path is copied and added in the terminal here. So terminal इसी folder में open हुआ है, and I'm just launching a new Jupyter notebook in this case. So let me launch Jupyter notebook. So as soon as I run the Jupyter notebook command, so automatically this notebook will open into my browser, and from there which will provide me a Jupyter ID. So this is the ID where we guys were writing our code, and today this was a previous class code, and if I want to create a new code, I am creating it with this kernel. So click on new option, and this is, let's suppose, just rename it as day 2. So what is the plan for the day, guys? Today we are going to see a lot of things. Technically, we are going to see a lot of parts about Python, specifically conditional statements, and the loops are the major part, and some many like 5 to 8 major or minor projects we are going to build it today. So it will be again completely hands-on, and the projects we are going to build it today, right? So we technically, guys, starting from this part, if we have something here, अगर हमारे पास एक situation हो जो हमें check करनी है, for example, हमें यहाँ पे check करना है this number is technically equal to 5, right? And this number is divisible by 5, yes or no. So I want to check it whether the number which I am entering here is divisible by 5 or not. So I can write whether this number is if completely divisible by 5. So for this we use if else condition, right? अगर आपके पास दो choices है technically, अगर एक choice fail होती है तो you want to go for second choice, right? If second choice fails it, you want to go for the another block over here. So multiple choices. If this condition I want to check, right? Just one more example of the same. You want to check if the person has a movie ticket, right? The person has a movie ticket. It means he has true. The person has a movie ticket with him. If the person has a movie ticket with him, then we can allow this particular person into the movie hall. So we have a movie hall. If we are just checking whether the person has brought the ticket or not, there is one ticket checker. Same way, if you go to the train or by any other means, they check your ticket. So if you have the ticket, you are allowed inside the movie hall, right? If you don't have the ticket, then again, they will tell you go and purchase the ticket over there, right? For this, if you want to check some conditions in the world of Python, we use technically if conditions over here. If as a condition, if condition we want to check it. So technically I want to check multiple things over here. In this case, I want to check whether the person is, if the age of the particular person is greater than 18, right? This particular person can give a vote. If the age is less than 18, so that particular person cannot give a vote over here, right? So in this case, we are checking one condition here, whether the person has given his age is particularly greater than 18 or not, right? So I'm checking one condition here. So for example, the same case I want to do it in Python. So I'm checking here, I'm just creating one variable called age as a variable, right? I'm checking age is equal to, maybe I want to take
I want to make it more dynamic. So for here, I want to make it more dynamic. Here means technically this value, instead of hard coding, that's 18, 19, 20 or X, Y, Z, I am eventually giving here all the values by default. तो हम यहाँ पे कुछ values को automatically input लेंगे as a user से, right? So I want to take the input, so I can take the value as a input. Right, again input function, they will ask me enter your age. तो input function हमसे पूछ रहा है age आपकी enter करो. So I am asking, entering here age as 20, तो automatically enter, and this value is getting stored inside the age variable. राइट, सो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इट इज टेक्निकली गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड वन वेरिएबल कॉल्ड एज एज वेरिएबल ओवर हियर. राइट, now what I want to print the value of this age, so I can quickly use print age over here. So they're telling me the value is 20, but if I want to check the data type of it, so we have a type function available. It's again a built-in function in Python. They tell me what is the age of this. So again we are taking integer as a value, we are taking number as a value here, and in the number as a value they are taking and storing this input as a string. Why? Because Python के अंदर जो input function है वो by default value को जो store करता है, it takes the value as a input variable over here. So inside input by default string value store होती है. If you store it or if you don't store it, it will technically take and store all the values as a string for us. राइट, तो इसको हमें स्ट्रिंग की जगह पे इंटीजर कन्वर्ट करना होगा. सो आई कैन डू टाइप कन्वर्जन इन दिस केस. आई कैन टाइप इंटीजर हियर एंड कैन टेल ये पूरी वैल्यू जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग वैल्यू इन आवर केस. नाउ वट एवर वैल्यू वी एंटर 22 हियर, ऑटोमेटिकली अब इसको प्रिंट करते हैं. प्रीवियस वैल्यू 20 थी, अब ये वैल्यू यहाँ पे 22 स्टोर हो रखी है. राइट, सो दिस वैल्यू इज 22 एंड टेक्निकली न्यू वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन स्टोर किया है हमारे केस में. ओके, तो इन दिस केस एंड नाउ इफ आई सी व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इट, तो दे आर टेलिंग मी द डेटा टाइप इज इंटीजर. व्हाई? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर रखा है स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर. राइट, सो इट्स टेक्निकली कॉल्ड एज टाइप कन्वर्शन, जो हमने कन्वर्ट किया है इस पर्टिकुलर वैल्यू को. नाउ व्हाट आई वांट, this value whatever is user is entering, I want to check the condition. The syntax of technically if condition is conditional statement, we write it here if. The syntax is something like this: if this is our condition, if the condition is true, right, then run this block of code. If this condition is not true, technically unless and until this is not true here, this will go and run the else block of code for us. Right, so whatever 12 block of code we are writing, अगर ये condition true रहेंगी तभी ये block of code run होगा, otherwise else block of code run होगा. Right, this is technically called as multiple conditions we are checking. So एक यहाँ पे हम एक condition check करते हैं. अगर यहाँ पे person ने age लिखी है, if the age is greater than or equal to 18, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. क्या जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, कंपेयर किया था कि एज जो है वो 18 से बड़ी है तो पर्सन को अलाउ करेंगे वोट देने के लिए, अदरवाइज पर्सन कैन नॉट गिव अ वोट. राइट, सो आई एम एंटरिंग हियर इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन वट एवर यू वांट टू डू इट हियर. आई एम जस्ट प्रिंटिंग सम स्टेटमेंट हियर. राइट, आई एम प्रिंटिंग some statement. For example, you can vote, something like this over here. Right, now if I print it, run it, this is giving me you can vote. But इस age statement को हम कॉपी करते हैं, जो वेरिएबल है इसी सेम वेरिएबल को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं और रन करते हैं. Now I am saying the enter your age, so age is technically here as maybe 11. So again we are checking, there is not printing anything. राइट, सो अगेन ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट भी रन नहीं होंगी. सो आई एम चेकिंग हियर एनी ऑफ द कंडीशंस व्हिच आई एम एंटरिंग दिस वैल्यूज. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करना है, उसके लिए हम हमेशा एल्स ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं. राइट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा.
So if condition, always and always go and check for true statement. अगर ये if condition अगर आपका true रहेगा, then only the block of code will be running. So whatever condition you want to check it, we write it over here. Condition. Right? In this case, this condition is running technically and it is, we call it as this condition is true. So ये true होंगी, then this else else block of code run नहीं होगा यहाँ पे. But हम चाहते हैं ये condition यहाँ पे false हो गई. क्या age जो है वो 18 से बड़ी है या 18 है? Answer is no. तो 11 is not greater than or equal to 18. तो यहाँ पे हमारा else block of code run होगा. So I'm checking here and telling else, mention it, whatever you want to run it. So example, I'm running print. I'm just writing one statement. You cannot vote. Right? I'm running this over here. The entire kid. So agar koi 11-year-old kid hai, is entering the value. So it is saying you cannot vote. If somebody is having 20 years of age, is technically greater than 18. So this is telling me you can vote. So this example is technically called as we are running and checking the condition statements over here. So I'm checking the condition whether this person can vote or this person cannot vote it over here. Likewise, multiple examples of if else condition we are going to see today, and some more nested conditions and tons more other conditions also we are going to see in the today's class, right? So again, I hope you understand the logic of if else statement. Even though you do not understand, no worries, we are going to see it with multiple examples. So at that time you will understand it over there. So whatever we have seen in the previous class yesterday, which is technically about some comparison operators, arithmetic operators. Today we are going to use all those operators to create some conditional statements over here, right? So let's see one more example here. So what I want, so technically I want to check a number, right? So one number I have it with me is technically called as, let's suppose 15 as a number. I want to check whether this number is divisible by 5 or not, right? So in this case, I can write one more condition. So if whatever number you have with you, so I can use a symbol of %5. %5 technically क्या करेगा, इसको divide करेगा, and reminder should be always 0 here, guys. तो ये परसेंट सिंबल क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, सो इफ यू रिमेंबर अ मैथमेटिक्स विच यू गाइज हैव लर्न इन योर 8 और 10 क्लासेस, तो टेक्निकली 5 है, हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 into 3 is 15 एंड द रिमाइंडर हियर शुड बी 0. तो अगर ये रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है यहाँ पे, 5 से 15 जो है वो completely divisible है यहाँ पे, right? So that's what we are checking here also. If the number whatever we are entering here is completely divisible by 15 और reminder हमेशा 0 रहेगा, तो it will print something for us. It will print number divisible by, so I'm telling number. अब हम चाहते हैं नंबर की वैल्यू भी हम यहाँ पे एंटर करें, तो अगेन बेटर प्रैक्टिस, आई वांट टू पास 15, नंबर 15 इज डिविजिबल बाय 5, तो हम इसको यहाँ पे एफ स्ट्रिंग से पास कर सकते हैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल को, राइट? सो जो वेरिएबल का नाम है, हमारे केस में वेरिएबल का नाम नंबर है, और हम चाहते हैं इफ यू वांट टू ऑटो कंप्लीट इट, तो यू गाइस कैन प्रेस अ टैब की ऑफ योर कीबोर्ड, तो इट विल ऑटो कंप्लीट द वेरिएबल नेम फॉर यू, right? So tap key and press enter. It will suggest you some variable value and they will give it over here. So I'm telling here the number 15, and then whatever I'm passing is divisible by 5. That's it. If it is not divisible, then it will tell else I'm writing print not divisible. So again, string always in double inverted commas. Not divisible. So right, number 5 is completely divisible, right? So likewise, multiple examples also we can check it. So right, 15 is divisible. Again, we are entering here any random values.
So we are hard coding. So technically अगर हम कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंटर कर रहे हैं, it is called as hard coding of the values. So I don't want to make it hard coding. Instead I am creating this is an integer और हम यहाँ पे input function लेंगे और input function में mention करेंगे enter your number. That's it. So now it is asking me whether 20, I'm entering 20, so they are telling yes, 20 is divisible. I'm checking 21, so it is not divisible by 5, right? So again, good practice, not divisible by 5. So again, give you some example here. So 33 is technically not divisible by 5 और इसमें रिमाइंडर बच रहा है 3 का, so it is not completely divisible by 5. तो यहाँ पे कुछ float values आ रही थी हमारे केस में, तो हम यहाँ पे find out कर सकते हैं इसको, राइट. लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे एक और नंबर फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर देखते हैं, TEMPERATURE, right? So current temperature maybe is 5 here with us, right? So I want to tell if the temperature is greater than 5 or temperature is positive, इसका मतलब it is warm outside, and if the temperature is negative, it means it is cold outside. So I'm checking here if temperature is greater than 0. So all the comparison operators I'm using it over here. If the temperature is greater than 0, so I'll print something here. Print again temperature is positive, something like this. TEMPERATURE, temperature is positive, right? Or else temperature is negative. Also, I am not checking condition here. I am printing else in double inverted commas string temperature is negative. That's it. So right now temperature is positive. Again, this value I am entering. Right? Suppose instead of this I want to value the integer और इस value का input लेते हैं and I am entering enter the temperature. That's it. So now I'm entering -1. So they're telling me temperature is negative. If I enter again, I'm entering running it. Temperature is, let's suppose, 44 degrees Celsius. So temperature is positive. So I'm checking here. The temperature is negative. Temperature is positive over here in this case. Again, number is positive. Number is not positive. Likewise, multiple things you want to check it. Right? And one more thing I want to check, one last example in if condition statement. For example, I want to check one more thing, guys, here, right? For example, there are 10 employees in my company, right? I want to give some extra bonus to one of the person, right? So any of the person who has 5 years of is greater than 5 years of experience, they will get around 10%, 20% bonus from our side, right? So I want to check all the employees, how many year of experience they have inside my company. So year of service, technically they have given it, right? So what I want, so one more thing guys, whenever you create any variable, आप जब भी कोई variable को create कर रहे हो, it is always and always a good practice उस variable को एक meaningful name दो. For example, हम यहाँ पे temperature का कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इसका temperature name दे रहे थे. Why? Because maybe after some time, slowly we keep on writing the code. So at that time it becomes very much illogical कि ये variable हमने किस लिए use किया है उस पूरे code में. So at that time you will with this code after a few days, after some time, the same code you revisit it. तो ये code आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा at that particular time, right? So always in good practice, whatever variable you are creating, give some meaningful name to it, right? So let's continue with the next part. So example here, year of experience नाम से हम करते हैं. So year of experience. We cannot give like this over here because this is not a continuous value. So I have to give one single value. So I am using year of underscore experience. So whatever experience somebody has it, again I'm taking the value of integer. So I'm converting the input function, enter your experience. That's it. Just one value I'm taking it here. And if the year of experience is greater than 5, so I'll tell here I want to
give you some 10% bonus. So print, congratulations, or you get 10 10% bonus. That's it. Or else you can give it here else block of code, else print something like this, or else you get maybe 5% bonus. So whatever employees we have inside our company, if they have 10 year of experience, definitely they will get 10% of bonus. If somebody is having 2 years of experience, he'll get 5% bonus. So likewise, we can create multiple different examples over here. Right? So some few examples of if condition, if else loop, I have created it over here. Just to give this block heading, let me make this as a markdown. And I'm creating this as a heading here, maybe called as if else statement. Right? Something like whenever we want to run the if else condition, so we can write multiple conditions over here. So this is if else block of code. And inside this, guys, if you want to check one condition, in my case, I had only one condition, one block of code. So I'm checking with the if condition. But if you have multiple conditions here with you, for example, if you have one condition, second condition, third condition, fourth condition, right? So I'm writing one condition one. Maybe you have condition two. Maybe you have condition number three. So in any three condition, if any one condition is true, you technically have to find something over here, right? So हम चाहते हैं कि इस पूरे conditions में से multiple conditions को हम satisfy करें, या एक condition हमारी true होती है तो हमें कुछ काम करवाना है. अगर condition 1 true होती है तो I'll print something over here that you win 10 rupees, for example. Right? If condition 2 is satisfied, again, I'll print you won 20 rupees, for example, over here. If condition 3 is satisfied, I'll tell the you print 30 rupees over here. So likewise, if conditions, we can write it again and again and again. So the example, best example for this is if you want to check the grade. So हमें क्या करना है, हमें ग्रेड चेक करना है एक एग्जाम का, एक कॉलेज स्टूडेंट का. अगर ग्रेड का परसेंटेज, agar somebody is having the marks and their marks is, let's suppose, in the range of more than 80, greater than 80, so I'll tell you got A grade from our side. If the marks is from the range maybe 60 to 80, maybe we will tell you got B grade from our side. If the marks is less than 60, they'll tell you got C grade from our side. If the marks is less than 40, right, I'll tell you got D grade. So whatever marks we are getting it, multiple condition हम यहाँ पे check करेंगे. क्या person, जो भी person आएगा वो अपना grade check करेगा यहाँ पे, तो he will enter whether I have got 81 marks. So again they will go and satisfy, yeah, the marks is greater than or greater than 80, then this person got A grade over here. So this block of code will run, it will become true. Other block of code will not run in this case. Right? As soon as the condition become true, other block of code will not run over here. For example, one more thing. For example, the person has got 45 marks. So first condition, this block of code will go and run from here. They will go and check whether this condition is true. It is not true, so this will not run. So again, this condition is true. It is saying no, this is also not true. So they'll check greater than or less than 60. Answer is yes. Person has got less than 60 marks. So answer is condition satisfied. Right? So this block of code will run it over here. So as soon as the person got C grade in our case over here. Right? So likewise, I want to check multiple things over here in this case. So this is technically called as if else ladder. हम if and if. So multiple condition को हम बार बार यहाँ पे if condition से नहीं लिखते हैं. Instead we write instead of if we write elif over here. तो elif क्या होता है? Multiple conditions अगर आपको check करने हैं तो बार बार आपको if condition नहीं लिखनी है. You have to write elif keyword over here. Right? Now, let me quickly make this as a markdown. I'm making it here as if
elif, and else. This is the block of code. So I'm checking here. For example, I'm taking marks. I'm just storing some variable over here. Initially, I'm hard coding it. Maybe marks got 78. So one variable created, which is technically defining here that the marks of the particular user is 78 in our case, right? Now I want to check if the marks is greater than, maybe marks is greater than or equal to maybe 19% here. So I'll print, so print statement will run, print you get, you got, you got a grade, right? So one condition. Again, second condition, guys, one more thing, okay? If you don't forget any comma here, any colon here, if you don't close it with colon, and you don't give extra space also, this is technically 2 spaces they required, or one tab key you can type it here to mark it indent. So अगर आप proper indentation follow नहीं करोगे इसका, तो it is again will tell us indentation block error. So you will get receive some error. So if you receive this kind of an indentation error, it means आपने इसको properly align नहीं किया है. And every time even though you give it tab and you forget to close it, you will receive some error. This is telling me that in this line, if marks is greater than equal to 90, यहाँ पे आप colon भूल चुके हो statement को close करना. तो initially I'm just giving some errors and just guiding you so that near future आपको भी कभी ऐसे errors आए तो आप लोग भी इसको trouble shoot कर सकते हो, right? So in this case, let's add one more condition. If maybe and one more condition I'm writing. So elif, I am writing it here. If marks is technically greater than or equal to 75. So I'm telling here print the statement, print the marks. I'll tell you got B grade. That's it. So again, second grade here. One more condition I want to check. Elif, if the marks is greater than or maybe equal to 60 here, equal to 60. So I'm telling print you got C grade. So multiple conditions we are checking here, right? Maybe one more marks if elif condition marks is maybe greater than or equal to 40. So I'll mention it here. Print, for example, you got C grade or D grade, for example. You got D grade over here, right? And one more thing, if out of this, any of the cases, if somebody got any value which is less than 40, so I'll print here else case of statement. So I'll tell else अगर इस कंडीशन के बाहर से 90 से कम या 40 से कम किसी स्टूडेंट का मार्क्स आता है तो I'll tell here print I want to tell you that you got C grade. So अगर 1 हो 1 से लेके 40 की रेंज में कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूजर को मिलती है तो they got a C grade. So I'm just mentioning it here. You got maybe F grade from our side. That's it. So now technically ये block of code हम इसको एक single block में भी कर सकते हैं merge. Even though you don't need to copy it from here. If you want to have 2 different cells in the Jupyter notebook, so you can merge it. So you can select one cell, right control shift, second cell, select both the cells and press on right click and tell merge selected cells. Otherwise you can type shift or M by selecting it. So automatically 2 cells will get merged inside your Jupyter notebook. Some shortcut of Jupyter notebook. So this is hard coded. यहाँ पे हमने value को hard code कर रखा है. इसको हम अगेन इंटीजर से इनपुट ले लेंगे तो कोई भी थोड़ा डायनेमिक बन जाएगा. कोई भी यूजर आके इसको यूज करना चाहता है तो दे विल जस्ट एंटर द वैल्यू, एंटर योर मार्क्स टू चेक द ग्रेड, right? So some values I am entering it here. So इसको run करते हैं. I am telling enter your marks to check the grade. So technically I am telling here I got maybe 88 marks, right? So enter. So they are automatically telling me I got a B grade. Why? Because it is greater than or equal to 75. So this condition satisfied. So I got B grade, right? Same way if I run it again, maybe I got 60 marks or maybe 59 marks over here. So they're telling me you got D grade. So why D grade?
टेक्निकली 59 मार्क्स इज ग्रेटर देन और लेस देन और 60 से कम है, तो यहाँ पे डी ग्रेड मिल गया है हमें, करेक्ट। अगर 40 से भी कम रहा तो वी विल गेट डेफिनेटली ई एफ ग्रेड ओवर, सो मे आई गॉट 12 मार्क्स, so telling me you got F grade over here, right? So we are telling me technically हम लोग यहाँ पे print कर रहे हैं simple case में of this case we are checking whether one condition satisfied, second condition satisfied, third, fourth, जो भी condition satisfied true होती है, multiple conditions we can check it using if and elif condition in Python, right? Same way if you guys have used one of the device, mostly engineering student use it, is called as calculator. तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके हम दो नंबर वैल्यूज अगर यूजर से एंटर कर ले, फर्स्ट नंबर और मे बी सेकेंड नंबर, राइट, और हम यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इन दिस केस, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इट हियर, आई एम क्रिएटिंग थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। तो हम चाहते हैं हमें एक कैलकुलेटर बिल्ड करना है। सो वट एवर कैलकुलेटर यू हैव यूज्ड इट गाइज इन योर इंजीनियरिंग classes or at their engineering career or you guys are using it, so technically उसके पीछे भी कोई ना कोई कोड रन हो रहा है, that is also using some code, maybe it's in some different another language or any other different language, right? So some block of code is running, somewhat that kind of code we are going to create it today. So what I want, I'm taking one number here, so I'm just writing one heading, maybe let me add multiple cells here, let me make it markdown, right? So I'm telling here maybe some calculator code, calculator, right? So multiple examples today, multiple small minor projects you are going to see in if else conditions and some another topic for the day, right? Maybe I'm taking one number, first number, maybe this is my variable name, ये एक वेरिएबल का नाम है, तो इसको हम अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, इसको लेटर ऑन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं 10 वैल्यू, मे बी सेकेंड नंबर नाम से हम लोग क्रिएट करते हैं, सेकेंड नंबर ओवर हियर, मे बी सेकेंड नंबर इज ऑल्सो 5 इन माई केस। सो टू वैल्यूज यहाँ पे हम ले रहे हैं यूजर से, और ये यूजर के जो भी वैल्यू आएंगी इससे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ऑपरेटर नाम से हम लोग वैल्यू क्रिएट ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे मे बी हमें मल्टीप्लीकेशन करना रहा, तो अगर मल्टीप्लीकेशन करना रहा तो इसको हम एज स्ट्रिंग पास कर लेते हैं ऑपरेटर को, तो हमें स्ट्रिंग को मैच करेंगे। टेक्निकली अगर स्ट्रिंग स्टार हो तो ये स्ट्रिंग मल्टीप्लाई कर देना, अगर प्लस हो तो प्लस कर देना, अगर माइनस हो तो सब्सट्रैक्शन कंप्लीट कर देना यहाँ पे। लाइकवाइज आई एम डूइंग मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेशंस। सो हम यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर लिया, इसको रन करते हैं, ये वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया हमने थ्री, एक नंबर ले रहा है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड दी ऑपरेटर्स, राइट। सो आई वांट टू चेकिंग अगर कोई पर्सन यहाँ पे ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करता है जिसके अंदर प्लस हो, अगर कोई पर्सन प्लस सिंबल यूज करता है तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन करने के लिए सिंपल है, प्रिंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं क्विकली ताकि हम यहाँ पे मेंशन कर दें एडिशन इज मे बी जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फर्स्ट नंबर, राइट, और जो भी यूजर ऑपरेटर प्रेस करेगा तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस इसका हम वैल्यू सेकेंड नंबर से कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर को ऐड कर दिया सेकेंड नंबर से इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। लाइकवाइज अगर कोई पर्सन यहाँ पे एलिफ कंडीशन इफ दे आर यूजिंग द ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस विच इज माइनस ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, प्रिंट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन इज फर्स्ट नंबर, राइट, माइनस सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हियर। सो दिस माइनस ऑपरेटर अगर कोई एंटर करता है तो एलिफ
Second condition, if the operator, I want to do maybe multiplication. If somebody has entered star here, star technically asterisk means multiplication in the world of Python. तो हम यहाँ पे print कर देंगे. I want to go and tell multiplication is जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, फर्स्ट नंबर multiplied by second number. Just pass the variable name, guys. That's it. Or if somebody else have created the operator division, so again we will, if is equal to division, close it and run it here. So I'm printing it here inside f string, same part, division is, so first number जो हमें variable में stored है divided by second number. So two values, different values we have created. अगर इस 4 कीवर्ड के अलावा प्लस माइनस एस्ट्रिक और डिवाइड के अलावा कोई और वैल्यू अगर कोई रन करता है तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे एंटर वैलिड ऑप्शन फ्रॉम, यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टार कॉमा प्लस माइनस or divide. So this value will come up over here in this case, right? So quickly एक logic create हो गया, multiplication of 10 star 5, whether it's not taking the value of it. Let me cross check one more time. राइट या आप चाहो तो ये एडिशन के जगह पे आप डायरेक्टली प्रिंट करने के बजाय हम डायरेक्टली इसको प्लस माइनस में भी लिख देते हैं ताकि इट बिकम्स मोर सिंपल. So if you want to make it more simpler here, so I'm just removing the entire variable f string part ताकि more simpler हो जाए instead of making it more complex. So addition कर देगा, ये कोड हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं. आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. So one code and number of possibilities to write it. I'm just not going it for different approach, just making it little bit simpler. So those who are learning for the first time might face some, like you guys will think it is the harder way of writing. तो I'm just making it little bit simpler. तो यहाँ पे दो वेरिएबल इसको मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल इसको डिवाइड, दो वेरिएबल उसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो एक सिंपल वे में कोड लिखते हैं. आप चाहो तो n number of ways of writing the same code. So I'm removing it from here in this case, right? So enter void operation. So इसको हम again दोनों सेल को merge कर देते हैं. Selected, Control Shift and both the cells selected, and then click on Shift M. It will merge the cell. So now right now don't want to take the value from here. This is hard coded. तो आई एम टेकिंग स्ट्रिंग वैल्यू, तो इनपुट फंक्शन यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं. ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है हमने गाइस क्योंकि ये स्ट्रिंग है हमारे केस में, राइट? सो ये हम यहाँ पे एंटर करते हैं, एंटर ऑपरेशन फ्रॉम मे बी स्टार comma plus maybe subtraction or division. Just if you I want to write it, you can write a full case over here. Now these are integers, so I'm declaring the data type of this variable integer, and I'm importing input function, enter your second number. That's it. So again, same way, this is also not good practice to hard code it. I'm taking the value of input, enter your first number, right? So it becomes your simple calculator. It is now asking, enter your first number. My first number is maybe 10. What is your second number? My second number is 10. What is your operator? Do you want to do addition? Do you want to do subtraction or division? So I'm telling I want to do addition. As soon as I did addition, automatically they have told me addition of this is 20. Just if you want to make it more simpler, you can add maybe plus operator है तो print कर दो. यहाँ पे I'm printing addition is this one. So you can see 10 and 10. I want to do addition, so they are doing addition is 20. Right? So आप चाहो तो f string के through भी इस value को pass कर सकते हो. If you want
You can write it multiple ways you want to pass a variable inside it. So it's just like a simple calculator guys we have selected. आपके keys जो आप press करते हो technically keyboard पे, it is the same key you guys are pressing it right now, right? So I'm also pressing what is your first number, maybe 33, maybe what is your second number, 11. So I want to do is I want to divide. So 33 divided by 11 is technically 3 value. So we get three values over here in this case. So I got output here that this value is 3 in our case over here. Right, so one simple code of calculator we guys have created it over here. It can be a kind of a mini project over here of your case, but there are many more libraries guys which we are technically going to see in the upcoming days. One of the library is tkinter as a library. What this will help us, well technically ये हमने अभी इसका backend logic create किया है. Slowly as we proceed in this classes, maybe if we had tkinter as a in our curriculum, we guys will go and see it over there. So somewhat like this GUI also we will create it, same exact GUI of our own simple calculator. And then maybe in the near future आप इस calculator को convert कर दोगे exe फाइल में by using some different libraries of Python. तो आप खुद का calculator use करोगे instead of using and creating it, which is by default created by Microsoft or some company over here, right? This is one of the example of the logic. One more logic we can create it with this. For example, अगर कोई person यहाँ पे generally e-commerce website uses this logic. So if you go and see Amazon as a company, so Amazon as a company, if you go and purchase something in their sale, so if you have given a lot of purchase, for example, if you purchase more than 10,000 here. So I'm telling here, if कोई person अगर 10,000 rupees से ज़्यादा purchase कर रहा है, तो that particular person will get some additional 20% discount from my side, right? If some person is doing a shopping of 5,000, so 5,000 अगर कोई person कर रहा है shopping, तो I'll tell him he will get only 10% of 10% of discount from our side in this over here. Right? In this case over here, अगर कोई person not 500 5,000, अगर कोई person 1,000 का यहाँ पे mention कर रहा है, तो इसको हम mention कर देंगे. अगर कोई person shop करता है को हमारे this shop से, for 1,000 they will get 5% discount. So the multiple options we have want to check it. Otherwise कोई 1,000 से less करता है, तो they will get 0% discount. Right? So one multiple examples we can give it over here. One more example of if else condition, just one example. Mostly generally हम लोग create करते हैं. You guys might have seen it in the shopping websites over here. So most of the time behind the scenes some kind of code is running, and that code will tell you guys whether you get a discount or not. So I'm going to discount calculator, a discount offer. Right? Some kind of mini project it is. So अगर कोई पर्सन परचेस करता है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेट कर डिफाइन करते थे परचेस PURCHASE amount. Just one variable I'm creating. Whatever user is purchasing, for example, this person has purchased for 7,500. So 7,500 person ने create किया है purchase amount. इस अमाउंट का बैलेंस उसने परचेस किया है. तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं. सेम लॉजिक गाइस, यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज किया है, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे. इफ द परचेस अमाउंट इज ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू 10,000, once again greater than or equal to 10,000 here, so we'll tell print some kind of a code. I want to print it here. Right, I want to tell here what is the exactly the discount you want to give it. So I'm telling here I want to give a you receive the discount of maybe I want to give it 10%. So अगर 10,000 करता है तो हमें 20% का discount है. I am giving here this person got a 20% discount. Right? In this case, this person got a 20% discount over here. अगर कोई person 20% से 10,000 से ज़्यादा shop करता है, तो I am giving this much percent of discount to the user. Right? Likewise, I want to go and give here elif
purchase amount is greater than or equal to maybe 5,000. So my case में यहाँ पे मैं second block लिखा था 5,000 नाम से. So 5,000, so I will print it here. This you receive the discount of 10%. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 5,000 परचेस कर रहा है तो 10% हमें यहाँ पे मिलेगा डिस्काउंट. राइट, इन दिस केस दे आर गेटिंग अ 10% डिस्काउंट ओवर हियर. Then one more thing, guys, last part, one more thing, again, before one last example on LF condition. So purchase amount अगर greater than or equal to रहता है, यहाँ पे अगर 1,000 से, so we will give them a discount of 5% over here. राइट, तो ये लास्ट कंडीशन हमने लिख रहे हैं. 3 कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में फॉर अस. सो इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,000, सो आई एम मेंशनिंग प्रिंट you receive the discount of 5%. अगर इससे कम होता है तो हम यहां पे मेंशन कर देंगे लास्ट कंडीशन या फिर एल्स कंडीशन लिख सकते हैं. एल्स अगर कोई पर्सन इससे भी कम परचेस करता है तो प्रिंट, सो हम मेंशन कर सकते हैं परचेस minimum 1,000 to receive the discount. Right? One kind of a discount calculator. तो इस 7,500 था तो ऑटोमेटिकली 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है. अब इन दोनों सेल को हम चाहे तो मर्ज कर लेंगे क्विकली. कंट्रोल शिफ्ट and select both the cells and control shift or maybe shift M, they will merge both the cells for us over here. Right, so I am valuing entry value over here integer. This value should be integer and I'm taking the value as input and I'm entering here, enter your amount to check discount. A kind of a discount calculator बन चुका है यहाँ पे. तो for example I have purchased about 3,000 rupees, so they tell me I got a 5% discount. Again, some another person have purchased for 12,000 rupees, so he got 20% discount on it. Right, so kind of a discount calculator we have created it over here in our case. Right, this is technically called as multiple conditions. We are checking it over here. One more condition, for example, one more like this is technically calculator. If else conditions we are seeing it. One more, guys, are technically called as nested loop. So let's go and see the nested loop. So अगर आपके पास multiple condition है, एक condition अगर satisfy होती है person की, so for example अगर हम देखें यहाँ पे ATM कार्ड का example देखते हैं. तो अगर ATM कार्ड में अगर हम देखें तो फर्स्ट थिंग इज पर्सन के जो कार्ड है आपके पास प्रेजेंट, इसकी वैलिडिटी हमें चेक करनी है. अगर इसकी वैलिडिटी सही है देन गो एंड आस्क फॉर समथिंग. तो फर्स्ट आस्क फॉर पिन, अदरवाइज टेल कार्ड की वैलिडिटी इज एक्सपायर्ड if the validity is not there of the card. So technically हम यहाँ पे एक condition लिख रहे हैं, if validity is technically true, validity is true, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा. बट हमें यहाँ पे वैलिडिटी भी चेक करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे इसका पिन भी चेक करना है. हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर पर्सन जो पिन एंटर कर रहा है दैट पर्टिकुलर पिन इज करेक्ट और नॉट. If the particular pin is correct, then I will tell and do something over here. Right? Same thing happens when we go and watch it over there in the maybe technically ATM shop or ATM wherever ATM machines are there, you go and visit it. So at that time, same thing happens. So पहले आपके कार्ड की वैलिडिटी चेक करेगा, अगर वैलिडिटी है फिर उसका पिन आपको रिक्वायर मांगेगा. अगर पिन करेक्ट रहेगा तो मल्टीपल कंडीशन आई एम चेकिंग इट हियर. जैसे इफ कंडीशन पहली कंडीशन थी यहाँ पे वैलिडिटी कंडीशन, इसके अंदर एक और कंडीशन चेक करनी है जिसको है पिन. क्या यूजर ने पिन एंटर किया है, यस और नो. इफ द पिन इज एंटर्ड करेक्ट देन दे विल गो एंड शो द बैलेंस over here for us. So something like this is technically called as, guys, एक if condition के अंदर आप एक और एक condition को check कर रहे हो, तो these are called as nested if else loop. So this is example of nested if condition.
right? So nested if conditions. So right now what I want, the same example I'm going to check here. I'm telling here the maybe I'm taking one card validity. So एक example ले लेते हैं यहाँ पे इसको quickly. Let me add multiple cells below. So nested if यहाँ पे हम इसको markdown create कर लेते हैं and maybe I'm creating ATM withdrawal. ATM code, something like this over here. Let me make this as markdown and run it. Again, ATM code, just a name I'm giving it over here, kind of a mini project. But this is not like a mini project, but just like some code I'm using it for example, so that we guys can understand and do the code logic part of it. So let's move to the next part. So in this case, we have a card validity. So I'm creating one variable here called card underscore validity. The card validity is true with us. So ये क्या हो गया है, कार्ड हमारे पास इसकी वैलिडिटी ट्रू है, ये बुलियन वैल्यू ले रहा है और बुलियन वैल्यू यहाँ पे हमने ट्रू कर रखा है इसकी वैल्यू को, राइट? अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे पिन. सो एंटर्ड अंडरस्कोर पिन नाम से यहाँ पे मेंशन करते हैं, मे बी pin is 4321. That's it, right? And again, it will go and check whether the pin is correct or not. So I'm checking here correct pin. So and underscore correct underscore pin. So ये ATM का पिन में भी करेक्ट भी 4321 था. तो जो चेक करेगा आपने पिन एंटर किया है एटीएम मशीन पे, इट इज करेक्ट, then it will go and enter the same pin and match it whether the pin is correct or not, right? So again I want to check whether this is the pin, this is the correct pin. maybe इसमें हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कि हमें विड्रॉ करना है अमाउंट को. सो विड्रॉ amount, maybe over here amount I'm giving maybe I want to withdraw 3000 rupees from my account, and maybe one more variable just like a variable account balance. चार वेरिएबल हमने यहाँ पे 4 to 5 वेरिएबल्स बना दिए. मे बी माई अकाउंट हैज मे बी 1 lakh rupees over here. Out of 1 lakh rupees I want to withdraw maybe 3000 rupees over here. So what I want to check first, I want to check guys if the card validity is true. तो टेक्निकली हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू को चेक कर रहे हैं. अगर ये वैल्यू ट्रू है देन आई विल गो एंड चेक द सेकेंड कंडीशन. My second condition is I want to check whether the person is the pin user is entering is correct or not. So if the pin whether user is entering, so entered pin is equal to correct pin, CORRECT correct pin, then I will do something over here. राइट. सो यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसके अंदर एक और एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कार्ड की वैलिडिटी ट्रू हो और उसका पिन करेक्ट हो. और वन मोर कंडीशन हम चेक कर लेंगे, अगर विड्रॉ बैलेंस जो है विड्रॉ अमाउंट वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए अकाउंट के बैलेंस से. So it cannot happen if you are having 1 lakh rupees and you guys are doing a withdrawal of 2 lakh rupees. So it is not technically possible over here. Right? So this is also one more condition. I'm checking it over here. If this all conditions satisfied, I will tell please collect your money. That's it. And if these conditions are not satisfied, अगर ये condition यहाँ पे satisfied नहीं होती है तो हम यहाँ पे इसका else block of code लिखेंगे. So again, this else of block of code will run. Guys, we don't write elif here. We just write else block or if condition because this is nested. So this if condition, this if else block should be aligned with the same if block which we are writing it over here. So in this case, I am telling else. अगर यहाँ पे option नहीं होता है, तो I'll tell here in this case print amount withdrawal is less than the account balance. So I'll print here. यहाँ पे इस block of code में हम mention कर देंगे you don't have enough amount to. So I'll tell when you don't have enough amount. Again, instead we'll tell withdrawal amount is greater than the account balance. That's it.
तो ये एल्स ब्लॉक में ये रन होगा। अगर एंटर पिन गलत करता है तो यहाँ पे उसके लिए भी एक और एक एल्स ब्लॉक लगा देंगे। एल्स अगर पिन मैच नहीं होता है तो एल्स हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, एल्स प्रिंट ब्लॉक ऑफ लाइन एंटर करेक्ट पिन, पिन, that's it. And if the card validity is false, so again we will tell else block of code enter valid card, invalid card mention कर देंगे। That's it. So yeah, please collect your money. So इसमें हमने double inverted commas और parenthesis लिखना भूल गए। So if you run it now, so technically they're telling me please collect your money right now of over here, but इसको हम और merge कर लेते हैं सारे cells को, तो control shift and select one cell, two cell, three cell, four cell, and five cells. So all the cells we have collected it here, and we will select and merge all the selected cells over here in our case. So card validity, maybe I am making it as a boolean value. पिन हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इंटीजर के वैल्यू में, और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे एंटर योर पिन, एंटर योर पिन, दैट्स इट, नॉट पिन, सो दैट्स इट। सो करेक्ट पिन ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कलेक्ट राइट वैल्यू हो, बट इन द रियल केसेस गाइस दिस वैल्यू विल बी कमिंग फ्रॉम योर डेटाबेसेस। सो wherever values are stored on your server at that time, it will be coming up from the databases of the company wherever you guys are storing your passwords or the user data at that time. So withdrawal amount, I will store it. Again, account balance will be coming up from the server. So I'm hard coding the account balance also here. So account balance को हम ऐसे ही रहने देते हैं because again it will be coming up from the server. So enter pin and integer. I am entering the input, and in this I am telling enter your withdraw amount. That's it. So I entered, enter your pin. They're asking me for one, two, three. I entered. So they're telling me withdraw amount also they're asking me. So I'm telling 1, 1, 2, 1, 2. So a pin, incorrect pin, they are giving it over here. So again, this withdraw amount does not works here. So अगर ये condition ही हम यहाँ पे run कर सकते हैं better, कि अगर कार्ड वैलिडिटी ट्रू है और पिन एंटर्ड करेक्ट है तो इसको यहाँ पे पहले विड्रॉ का अमाउंट मांगो, फिर उसके बाद चेक करो कि अकाउंट बैलेंस में और यहाँ पे कोई डिफरेंस तो नहीं है. सो सेम वे आई एम चेकिंग द एंटर्ड पिन, तो फर्स्ट चेक द कार्ड वैलिडिटी over here. So I'm running the code. They're asking me for a pin. So I'm entering the pin here 1111 random pin. So incorrect pin they are giving me. So again I'm telling here I am entering the right pin 4321. So ये withdraw amount automatically you see अगर आप withdraw amount तभी run होगा जब यहाँ पे हमारा pin entered जो हमारा वैल्यू स्टोर्ड है उससे मैच करे 100%, then only this block of code will run over here. Right? So this is technically called as we are matching this block of code, and in this case I'm checking here that entered pin and correct pin both the values are equal over here. Right? So how many amount I want to withdraw. For example, I am entering here I want to withdraw this much amount, but हमारे अकाउंट में ही उतना बैलेंस नहीं था, तो you can see withdrawal amount is greater than account balance. तो else block of code यहाँ पे रन हो रहा है इस केस में. तो जो भी वैल्यू हमने एंटर की है वो वैल्यू हमारे अकाउंट में उतना अमाउंट ही नहीं है. राइट? सो इफ यू एंटर राइट नाउ, सो आई एम एंटरिंग अगेन 4321 withdrawal amount, maybe I want to withdraw 100 rupees. So entered, so please collect your money. That's it. Your ATM machine ran and they have given you the entire code of it. Right? So again, nested condition, I am checking it over here in my ATM machine. So one example of ATM machine to check multiple condition. एक if condition, उसमें एक और condition check करनी है, फिर उसमें एक और condition check करनी है. These are called as nested if conditions in world of Python. One more example, quickly we can check it. अगर हमें किसी person को loan देना हो तो एक एग्जाम्पल चेक करते हैं. आई वॉन्ट टू चेक वेदर द पर्टिकुलर पर्सन का जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर 720 है, राइट, और उसकी जो एनुअल सैलरी है मे बी 40,000 रुपीज पर मंथ वहां पे अर्न करता है, एंड पर मंथ सैलरी इसको मान सकते हैं. सो इफ द पर्सन इज स्कोरिंग 40,000 रुपीज पर मंथ एंड इट हैज
अगर हमारा बैंक का क्राइटेरिया है कि हमें 30,000 रुपीज अगर पर्सन अर्न कर रहा है पर मंथ का, और उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो ग्रेटर देन 700 है, देन ओनली गिव द पर्सन अ लोन फॉर्म, अदरवाइज द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू रिसीव अ लोन। सो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड यहां पे रन करा। तो दो कंडीशन है हमारे केस में, आप सेटिस्फाई कर सकते हो, या फिर एक और कंडीशन आप लगा सकते हो यहां पे कि उसके बैंक अकाउंट में इवन दो ही इज अर्निंग 30,000 रुपीज पर मंथ, उसके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 2 लाख रुपीज यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम आवर साइड। सो मल्टीपल कंडीशन, तो ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब जाके इस पर्टिकुलर पर्सन को लोन मिलेगा यहां पे, अदरवाइज इस पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट रिसीव अ लोन फ्रॉम आवर साइड, right? So one something like this example I am creating it, right? So one more, let me add multiple block of cells. So B keyword, while selecting the cells, B button of the keyboard will add multiple cells each below each other. So now what I want writing hash here, maybe loan approval system kind of a code I'm creating it here. Now in this case, what I want, I'm taking one variable, monthly salary, SALARY is maybe for example 40,000, अगर किसी यूजर की 40,000 यहाँ पे monthly salary है, right? One more variable I'm creating here, credit score, राइट? सो क्रेडिट अंडरस्कोर स्कोर, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिट स्कोर जो है वो 720 है यहाँ पे, राइट? तो मे बी दिस टू कंडीशंस हम चेक करते हैं क्विकली। सो आई वांट टू चेक इफ the monthly salary is greater than or maybe equal to 25,000 या 30,000, हमने यहाँ पे मेंशन किया 30,000 के ऊपर है, तो हम पर्टिकुलर पर्सन को लोन के लिए सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन ये है, इफ क्रेडिट स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 700, then only tell print loan approved. Yeah, one more condition you can add it here, right? If the person account balance, so account balance नाम का हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, इसको हम ऐड कर लेते हैं क्विकली इन द टॉप ऑफ दिस। सो आई एम टेलिंग अकाउंट का जो बैलेंस है मे बी इज 2 लाख रुपीज, right? So three criteria we're checking. The account balance is greater than or equal to, or maybe just a balance. He has greater than or equal to security deposit or balance, whatever you want it. So just random check, I'm doing it. So account balance is greater than or equal to maybe 2 lakh rupees. So it's become unit, tens, 100,000, 10,000 and the 2 lakh rupees. So three conditions satisfied, then only tell the person loan approved, right? Else else if the balance is less than 20 to greater than or is less than 2 lakh rupees, so tell else, we can tell print here also, uh sorry, you have very less security deposit, right? Again, if the credit score is less than 700, so this block of code will align from here. तो ये if condition जहां पे रन हो रही है, else close block of code भी वहीं रन होगा। else अगर credit score 700 से नीचे होता है, या हम मेंशन कर सकते हैं sorry your credit score is very slow, so sorry your credit score is low, राइट? दिस इज वन थिंग। सो अगर मंथली सैलरी का होता है तो एल्स ब्लॉक ऑफ कोड में हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देंगे प्रिंट में सॉरी लोन नॉट अप्रूव्ड, राइट? स्ट्रिंग है तो ऑलवेज राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमास हियर एंड नाउ रन इट, राइट? तो लोन ये हमारे केस में यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। अब इसको हम मर्ज करते हैं, वी विल मर्ज फ्रॉम हियर ऑल द सेल्स। सो कंट्रोल शिफ्ट एंड सिलेक्ट वन सेल, टू सेल, control and shift, select the cell, control, oh, why it's not selecting it here, one second, control shift select and select it,
and right click, or otherwise you can press Shift M. This will merge the selected cell. Right now, annual salary, monthly salary, I am taking it over here. I will take this value from the input function. So anybody who comes up will enter your monthly salary, right? And again, a credit score. So I'll also ask the credit score from the user. So input, I'm telling enter your credit score. That's it. So account balance, again, it will be also integer. So I'm mentioning it here. I want to take the input function, and the value will come from here till here, and it will take account balance, enter your account balance. That's it. Right now, if I run it, so they're asking me three things: enter your monthly salary. Maybe I'm entering my monthly salary over here as 45,000. What is your credit score? Maybe my credit score is 750 over here. Right? What is your account balance? Maybe I have 3 lakh rupees in my balance. So it is 30,000 and 3 lakh. So as soon as I press 3 lakh rupees, they told me all the three conditions satisfied. So my loan is technically approved over here. राइट सेम वे अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा लोन अप्रूव नहीं होगा राइट सो अगेन सेम कंडीशन आई कैन टेल हियर my monthly salary maybe is 12,000 rupees in this case 12,000 rupees over here and your credit score is maybe let's suppose 400 in your case the account balance is also 20,000 rupees. So then I'm telling, sorry, loan not approved. So else block of code will run in our case, right? So this kind of a quick loan calculator, we have created it over here, right? Likewise, multiple other things you guys can go and create it as we proceed further. We guys can go and create multiple programs using it. But now I want to go and start one more topic, which is technically called as for loop. So what I want in this case, this program is running. So guys, in any of the time, whenever you are running the code and it is continuously running, so you will get a star symbol over here. So, right? So star symbol here means this code is running in our case. And I want to stop this code so I can see this code is asking for an input from our side. तो ये input के लिए wait कर रहा है and I am not giving the input. So even though I write 100 lines below, so I am printing it here, hello all. That's it. So you can see they will give me some error or warning. Cell not executed due to pending input. Right? So the cell run nahi ho पाएगा. This kind of warning we will get it over here. So in this case, अगर आपको इस तरीके का कोई warning आता है, तो in your case you can do one thing. You can either give the input here, some random values you can enter it, or else you can restart the kernel in your case. So I can tell here I want to restart the kernel, so you can restart the kernel from here. So ये क्या होगा टेक्निकली आपका जो ये कोड है ये कर्नल है ये रीस्टार्ट हो जाएगा यानी सेम कोड वापस रीलोड होगा आपके टॉप पे ऑन द टॉप ऑफ योर रैम राइट एंड देन यू कैन रन ऑल द सेल दे विल रन इन गिव यू द आउटपुट सो राइट नाउ I don't want to go it here. So one program was waiting for input. That is why you cannot run it over here. Right? Now let's go and start with the for loop. So for example, guys, if you want to have some condition, आपको same block of code multiple times run करना है. So this block of code I want to run for one time, then again I want to run it second time, then again I want to run it 3 times, and again you want to run it 4 times. So in this case, we use loop in the world of Python. Right? So technically we have two different types of loop. One is called as for loop, one is called as while loop. Right? Good part about for loop is guys, when to use for loop. So जब आपको पता हो कि आपको कितनी बार उस कोड को रन करना है यानी iterate करना है, how many times you want to run your code over there, at that time we use for loop over here. So you want to run it for 3 times, 4 times, maybe 100 times, 1000 times. So you know the condition how many times this will run it. It's technically अगर आपको पता हो
ये कंडीशन कितनी बार रन होना है, यानी कितनी बार इटरेट करना है. सो दिस इज टेक्निकली एट दैट टाइम वी यूज अ फॉर लूप ओवर हियर, right? And if you don't know how many times this condition will run it till the time, for example, एक application run हो रहा है, जब तक कोई person उसको exit नहीं करता है, तब तक ये exit नहीं होगा, right? So this is technically infinite times आपको run करना है, या आपको पता नहीं है कब तक ये run होगा. So this is called at that particular time we use it while loop over here. Right, so this is one of the example in this case. But before while and for loop, I just want to tell you one about some part of range function. So guys, there is one function available in Python which is technically called as range function. So range function का काम क्या है? Whatever range you want to give it. So for example, I want a range from 0 to 10. So if print it, you print the value over here, print the range of 0 to 10, it will give you the range from 0 to 10. राइट, तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है. तो टेक्निकली रेंज फंक्शन, गाइस, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप विल कम बैक अगेन, बट बिफोर दिस फॉर लूप एंड व्हाइल लूप आई जस्ट वांट टू शो यू अबाउट द रेंज फंक्शन. सो हमारे पास एक फंक्शन है जिसको टेक्निकली बोला जाता है रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन क्या करता है? इसको हमें स्टार्ट वैल्यू देनी होगी, कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे स्टॉप करना है, राइट? और इसके अंदर हम स्टेप दे सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप? आई विल गिव यू एंड एक्सप्लेन यू एज वी प्रोसीड इट ओवर हियर, राइट? तो ये हम मेंशन कर रहे हैं रेंज फंक्शन में. रेंज फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो टिल मे बी 10 एंड जस्ट गिव मी दिस रेंज ओवर हियर. तो दो ही रेंज हमें मेंशन करें. तो ये क्या करेगा? ये स्टार्ट होगा 0, then it will give us 1, then it will give us 2, likewise it will give us 3, it will give us 4, it will give us 5, and likewise 6, 7, 8, 6, 7, 8 and 9. So it will give us a range from 9 variables. और लगभग लगभग आप देखोगे यहाँ पे 10 items होंगे. तो 1 item, 2 item, 3 item, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right? So there are technically 10 different items we are getting it over here. तो 1 to 10 एक पूरे आइटम्स मिल रहे हैं. लास्ट वैल्यू में जो आप स्टॉप करना है उसका हमेशा -1 होता है. यहाँ पे will always reduce one value for us over here in this case. Correct? So that technically called as, हम यहाँ पे range function का यूज कर रहे हैं, राइट? तो अगेन आपके पास अगर रेंज प्रिंट करनी है तो हम रेंज यूज कर सकते हैं, बट रेंज का हम यूज करेंगे फॉर लूप के साथ, तो इट विल गिव अस अ बेटर आउटपुट ओवर हियर. फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट फॉर लूप. फॉर लूप का सिंटैक्स वुड बिकम समथिंग लाइक दिस. फॉर टेल मी व्हाट टू डू. फॉर आई वांट टू डू इज वन वेरिएबल. यहां पे हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नाम का. किस रेंज तक रन करना है तो हम यहाँ पे रेंज फंक्शन मेंशन कर देंगे. सो इस रेंज में से इस वैल्यू को पिक करो और यहाँ पे हमें प्रिंट कर दो. तो यहाँ पे एक सिंटैक्स होता है इस फॉर लूप का. तो लेट मी क्विकली टेल यू ओवर हियर. लेट मी मार्क इट एज अ रेंज फंक्शन. सो लेट मी ऐड अबाउट सेल and let me go and use it markdown. Range and for loop, I'm technically using it here. So what I'm telling, what I'm going to do, so I want to tell for loop, do one thing, run it till the time, run it in the range of 0 to 10. राइट? तो इसके लिए ये वैल्यू को 0 से लेके 10 तक रन होना है और इस वैल्यू को पिक करो. फर्स्ट पिक द वैल्यू 0 और प्रिंट इट. तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, मे बी नंबर नाम से हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और इन कीवर्ड हम मेंशन करते हैं कि रेंज में से जाओ और एक नंबर को पिक करो और उसको यहाँ पे नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करो. तो फर्स्ट आपका नंबर जो रहेगा वो 0 रहेगा. तो सेकेंड नंबर जो रहेगा वो रहेगा 1 रहेगा. तो आप देखोगे यहाँ पे इट रन फ्रॉम 0, 1, 2, 3 till the 9 over here. This is the value of technically for loop
कंट्रोल वे में रन हो रही है यहाँ पे हमारे केस में, एंड इट इज रनिंग इन द रेंज फ्रॉम 0 to 9. So one specific range I'm going to give it over here. Likewise, multiple data structures also we have it. Maybe in the upcoming class we are going to see the data structures. One of the data structures which is technically called as list as a data structures, right? So we'll create list in the world of Python. For example, student name as a list I'm creating, student underscore name. ये एक लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और हम चाहते हैं इस लिस्ट में मल्टीपल स्टूडेंट्स अवेलेबल है. Guys, just hold on for a second. Shawan sir. So guys, for online guys, I hope my network went down for a second. Just give us a minute. My team is just fixing it. So those who guys are attending live, just hold on for a minute. My network went down for a second here. Just give us a minute here, guys. Okay, so let's continue back, guys. Had some network drop here. So technically, हम यहाँ पे एक list create कर रहे हैं Python में. We have a one data structure in the world of Python, जिसको हम बोलते हैं list as a data structures. If you know it, it's okay. If you don't know it, we are going to see multiple data structure in the world of Python also. So one of the data structure is called list. यहाँ पे हमारे पास list है. For example, we have multiple student Amit. We have it. We had maybe one student called Jack. Maybe we have one more student called Tom. So multiple students का list हमारे पास यहाँ पे present है. तो Tom, Jack, Amit, Pop, all the various we have it with us over here. Right? So in this case, I have the variable values. So in this case, हमने यहाँ पे क्या किया, एक list create कर ली है अमित, जैक, टॉम और पॉप नाम से. एंड इन दिस केस यहाँ पे टॉम, अमित, जैक, पॉप ये डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है. करेक्ट. तो ये एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. एंड व्हाट आई वांट टू पिक द वैल्यू ऑफ अमित एंड स्टोर इट इन वन वेरिएबल. तो अमित को हम पिक करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे. तो फॉर लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में यहाँ पे रन हो रही है. सो फॉर मे बी आई कैन क्रिएट एनी वेरिएबल. मे बी नेम क्रिएट कर सकते हैं, मे बी आई क्रिएट कर सकते हैं, मे बी जे क्रिएट कर सकते हैं, मे बी के क्रिएट कर सकते हैं. एनी वेरिएबल नेम आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. सो आई वांट टू टेल फॉर आई मे बी इन student name, it's not static method, student name. What I want to do, I want to print the value. So what I want to print, I want to print the student name is, and it is stored inside one variable called
called I variable. So if I run it, so you can see student name is Amit, student name is Chalk, student name is Tom, student name is Pop. वन बाय वन इस वेरिएबल को हमने पिक किया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया है. सो वी कैन डू इट इनसाइड द लिस्ट ऑल्सो. मे बी अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है किसी वैल्यू का तो हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे. तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टेबल नाम से. In this case, so I'm creating one variable here called as table. So 1 second guys, a table नाम से एक variable create कर लिया. Table, I want to print the table of 5 here, right? So I want to print the table of 5. So हम यहाँ पे range function का use करेंगे. तो यहाँ पे हम for loop लगा देंगे for I in range of 1 to 11. 1 से लेके 11 तक वैल्यूज हमें देगा या 12 तक जनरली हम लोग टेबल प्रिंट करते हैं, राइट? तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रिंट समथिंग ओवर हियर. व्हाट आई वांट टू प्रिंट, मे बी टेबल. टेबल फंक्शन का यूज करेंगे. इसको हम मेंशन करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो x सिंबल का प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे. तो इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे हमें रेंज मिलेंगी 5 इंटू 1. लाइक दिस आई वॉन्ट टू प्रिंट इट गाइस. 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 is equal to maybe 5. Likewise, 5 multiplied by 2 is equal to 10. Likewise, this way I want the output to be retrieved. तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जो भी वैल्यू है इसको हम इक्वल टू सिंबल दे देते हैं यहाँ पे. तो ये 5 टेबल में हमने क्या लिखा था, वैल्यू 5. फिर हमारा x वेरिएबल प्रिंट होगा, जस्ट अ स्ट्रिंग है, कुछ नहीं होगा, जस्ट एज इट इज इट विल प्रिंट इट. फिर i की वैल्यू क्या है 1. फिर इक्वल टू, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टेबल जो हमने लिखा है 5 इसको हम स्टार से मल्टीप्लाई कर लेंगे i से. दैट्स इट. सो व्हाट विल हैपन, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 का पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, राइट? यू वांट इट टिल 12, तो इसमें एक लास्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे हम यहाँ पे. सो 5 फ्रॉम 1 to 12 the entire table of 5 is created. Again, जस्ट वैल्यू वी आर चेंजिंग इट हियर. मोर डायनेमिक इसको हम बना सकते हैं. तो इसमें हम इनपुट ले लेंगे. तो हम प्रिंट कर लेते हैं क्विकली यहाँ पे. इफ यू वांट टू प्रिंट गाइज मल्टीपल लाइंस हियर, तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में हम प्रिंट करते हैं. तो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास आप यूज कर सकते हो टू प्रिंट मल्टीपल लाइंस इनसाइड इट ओवर हियर. सो आई एम प्रिंटिंग मे बी वेलकम टू टेबल table table generator. That's it. So maybe some characters hyphen something like this. It will look good. It will look little bit good here. So I'm just generating it like this here. So they will come from here to here. So enter and close it. That's it. Right. After this, they will take the input. So I'll tell them to take the input. इनपुट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल कॉल टेबल. तो टेबल का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेते हैं इंटीजर में. एंड वी मेंशनिंग इंटीजर, आई वांट टू एंटर द नंबर विच टेबल you want to generate. Just I'm entering it over here. Now it become more dynamic. So again, so you can see any error this telling me was never close. यहाँ पे technically syntax error है. यहाँ पे हमने integer को start किया है यहाँ से और यहाँ पे start किया और हमने इसको close ही नहीं किया है इस string को. तो हमें यहाँ पे close करना होगा. So I write here again. They tell me enter the table you want to generate. I said 2. सो 2 का टेबल जनरेट हो चुका है. अगर आप इसको मोर डायनामिक वापस रन करते हैं, 3 रन करते हैं, तो अब 3 का टेबल जनरेट हो रखा है. अगर आप इसको चाहते हो रन करना 20 का टेबल, तो यहाँ पे 20 का टेबल जनरेट हो रखा है. सो मोर डायनामिक वी आर मेकिंग इट ओवर हियर. इसको हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट मोर डायनामिक इन आवर केस. वी आर टेलिंग हियर which code, which table we want to generate it over there. Likewise, we want to create a square of some number also. So we can create a square of a particular number also over here. For example, I want to see the square from 1 to 25. So I can write a square of particular number. तो एक one इसको mark down कर लेते हैं quickly. And I want to tell square using for loop.
So multiple examples I'm using it, for loop and range. So हम for loop और range का यूज करके स्क्वायर प्रिंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का. So I want to print for maybe I in the range. तो हमें क्या चाहिए, अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1 से लेके 25 तक जितने भी वैल्यूज है, जितने भी नंबर्स है, उसका हमें स्क्वायर क्रिएट करना है. तो आई एम टेलिंग यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 26. वाई 26? क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू जो है वो एक कम होती है, वो एक्सक्लूड होती है, इट बिकम्स -1 in our case, right? So we can tell print I in the range of 1 to 26 in our case over here. तो स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट होगा. अब इसको प्रिंट करने के लिए हम मेंशन कर सकते हैं एक फॉर्मूला, स्क्वायर इज मे एस क्यू यू ए आर ई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आई. दैट्स इट. तो ये मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट जो भी हमारी वैल्यू है. तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होंगी जो कि हमारा नंबर है, और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर्ड squared 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 value is comma it is stored in square variable. That's it. तो इसको रन करते हैं तो कैन सी 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर एस क्यू यू ए सॉरी एस क्यू यू ए आर ई. दैट्स इट. तो स्क्वायर्ड वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. Multiple times whenever you go for any interview questions, maybe technically for if you go for Infosys or any other examples, so lightweight specifically this kind of questions they ask you to check whether you guys have the knowledge of this particular for range and basic understanding of the Python if you have it or not. So likewise multiple, if you want to find a cube, तो क्यूब फाइंड करना है तो सेम कोड, बस यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड आई. सो अगेन इट विल बिकम क्यूब. रन इट. सो कैन सी 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है. लाइकवाइज मल्टीपल डिफरेंट क्यूब्स वी हैव इट ओवर हियर right now in this case. And now using for loop and while loop we can create multiple tons of things guys here. For example हम चाहते हैं कि हमें एक स्टार काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट करना है. फर्स्ट रो में एक सिंगल स्टार होना चाहिए, सेकेंड रो में 2 स्टार्स होना चाहिए, राइट. थर्ड रो में 3 डिफरेंट स्टार्स होना चाहिए. फोर्थ रो में जैसे थर्ड रो है तो 3 स्टार्स, लाइक फोर्थ रो तो 4 different stars over here in this case. So 1 second guys, so it's taking a little bit lag here. So 4 different stars. So 1 star, 2 star, 3 star and 4 star. Likewise I want to create a triangle triangle pattern. So ये भी you create कर सकते हैं हम लोग using for loop and using multiple cases. So हम simple करेंगे क्या, इस केस में हम for loop रन करेंगे. For maybe इस वेरिएबल को स्टोर कर लेते हैं I into the range. तो हमारे पास रेंज कितनी है 1 2 3 4, 4 रोज हमें प्रिंट करने हैं. तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे. सो फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम मे बी 1 एंड गो टिल 6 ओवर हियर. तो 1 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है. और इसमें करना क्या है, इसमें हमें प्रिंट करना है वैल्यू को. कौन सी वैल्यू को, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट करना है और इस स्टार को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे हमारे आई के साथ. तो we'll see 1 star, 2 star, 3 star, 4 star and 5 star. So 5 different values we are getting it over here in this case, right? तो 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, लगभग 5 star का create कर लिया है. And it's like a right angle triangle. Just by writing 2 different lines of code, we have created it over here in our case. Right? So 1 line, 2 line, 3 line, different lines, multiple you can create it. And now if I want to do something reverse. आप चाहते हैं 1 to 10 print हो, तो again one same code I am copying it here. Instead of this, what I want to print the value of I. तो यहाँ पे I की वैल्यू प्रिंट करें तो 1 to 5 प्रिंट हो रहा है हमारे केस में. तो हम चाहते हैं इसको उल्टा प्रिंट करें. So I want to start it from 10 and it would want to go till 1. So in this case, this function is technically called as range function के अंदर एक ऑप्शन होता है
जिसको बोला जाता है स्टेप नाम से। तो हमने देखा था स्टार्ट करने के लिए, राइट, स्टेप करने के लिए, और सॉरी स्टॉप करने के लिए, नॉट स्टेप, स्टॉप। द लास्ट थर्ड पैरामीटर विच वी राइट इज गाइस इज कॉल्ड एज स्टेप ओवर हियर। स्टेप का मतलब ये होता है सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास यहां पे मल्टीपल वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7, so I want to take a step of 2, तो 1 के बाद या फॉर एग्जांपल फ्रॉम आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2, 2 के बाद अगर हम 2 का स्टेप लेंगे तो 2 से 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, द वैल्यू वी हैव रीच इज 4, तो हमें यहाँ पे स्टेप लिया है 2 का, राइट। सेम वे फ्रॉम 4 इफ आई टेक 1 स्टेप 2 स्टेप, तो यहां पे हमने स्टेप लिया है अगेन 2 का स्टेप, तो ये स्टेप हम यहां मेंशन कर सकते हैं इस केस में। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू गो एंड हाउ मच टू स्टेप इट। फॉर एग्जाम्पल I'm telling here for in this case, same code I'm copying it from here and I'm printing it here. So start from 1, go till 10 and take a step of 2. So let's see 1 3 5 7 9, start हमने कहां से किया, 1 से किया। अब सेम एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 से स्टार्ट करते हैं तो देखो 2 4 6 and then the value 8, 1 step 2 step 2 step we have taken it here, तो यहां पे 8 आ रहा है हमारे। तो दिस इज टेक्निकली कॉल्ड एज स्टेप, वी आर टेकिंग इट इनसाइड अ रेंज। हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स ले रहे हैं, 1 step 2 step 3 step, likewise we can take it the steps over here. So I am telling here start from 1 go till maybe 20 here, not 120 20 and take a step of 2. You can see 2 का पूरा टेबल यहाँ पे क्रिएट होगा, 2 4 6 8 10 15 14, one step 2 steps we have technically taken. But if you want to take and do something reverse, what I want, instead of printing this from 1 to 10, I want to print from 10 9 8 7 6, something like this. I want to print it over here. In this case ulta, reverse I want to technically print, right? Start from 10, then go for 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 3, 2, 1, something like this. This is technically called as we taking a negative step. I'm going reverse over here in this case. So, right, I want to take 1 step back. So in this case, I will tell the range function do one thing, start from 10 and go till 0 and take 1 step back. So negative step hai, so -1 we are entering it here. So now as soon as I enter this, you will see guys, this code will technically 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So again a negative step we have taken it. So same way, using this negative step of this, we can create a reverse pattern of the star also. So I'm telling start from 1, right, take and go till 10, right, and take a step of 2. So what will happen, every time you will see 1 3 5 7 and then 9 stars over here. So again I will tell start from 2 go till 10, or will take a step of 2, so 2 4 8 10, these are the different stars they are printing it over here. Likewise I want to make it different range. I'm telling here start from 10, or maybe start from 6 and go till 1 and take a negative step guys, negative step. तो what happened, उल्टा पैटर्न टर्न हो चुका है, पहले 5 4 3 2 1, likewise 3 and 2 only they have given it. I'll get 10 here, start from 0 and go till 0. You can see 5 4 3 6 5 4 3 2 1, technically they have created it over here, right? So -1 step, you want to take -2 step, so you can mention it here, I want to take a -2 step in our case. So likewise reverse pattern also we can create it in our case over here, right? So they are technically called as steps, we are taking it over here, and start stop and step, very very important part guys, because हो सकता है near future whenever you go for any of the job in the company, the guys might ask you this kind of questions over there. And most of the companies, whenever you go for any aptitude test, any coding exercise, any hands-on test, at that time, most of the companies ask you this kind of example, right? So one more example from my side, you guys can try it quickly. So I'm writing a range here. I want to tell, instead of printing from 1, I want to tell it to take it 2,
one, start from 1, go till 10, and I want it to have something, a triangle kind of pattern. So I'm taking, go and take a step of 2 and do one thing. Instead of printing it over here, right, do one thing, print one empty space. So what is happening? One empty space will be added and multiplied by I, we do it. So we'll see they will give us some error. You must enter iterable value. तो हम इसको multiply नहीं कर सकते. I'm not able to multiply it, right? So space, I'm just giving an empty space here, right? And what I want I multiplied by star. So in this case, I'm giving a string I multiplied by star. So maybe star over here. So what is happening? You can see some space added over here in this case, right? And this is coming up over here in this case. So one extra space added, again one more space I want to add it in the end. So space is also adding it here, but I can increase the value of I also. For example, I am telling here print I multiplied by star, where is asterisk, quickly double string asterisk, and every time do one thing, increase the value of I by 1. So I plus plus we are doing it. Technically I plus 1 we can do it here. So what is happening? I की value 1 थी, so it is becoming 2 now. So 2 has been increased by 2, but it is technically printing it here. और हम चाहते हैं इसकी value increase हो, तो हम यहाँ पे increase कर सकते हैं इस value को, right? I plus 2. That's it. So you can see every time it is increasing by 2 over here. I want to increase it by 5, so it is increasing by 5 over here. I plus 5, every time this block of code will run it, they will increase the value by 5. Likewise, again, multiple examples, instead of tar, they will ask you plus. So plus, you guys can print it. Negative prompt, you want, negative steps you want to take it, do minus, reverse the range, go from 10 to 0 and print it. So reverse triangle, we have created it over here. Right. Likewise, we can create multiple options over here in our case. Now this is the for loop and the range function we have seen. One last part for the day, guys, which is technically called as while loop. So if you want to run the loop till the time you don't know whenever it is running. For example, if somebody is using your code, using your application over there, and you don't know how much time this particular user will be using the code. Right? At that time, we use a while loop over there in the Python. So अगर आपको नहीं पता कि user इसको कितनी बार run करने वाला है, at that time we use a while loop in the world of Python. And very, very important part, guys, while loop always run infinite time over here, right? Unless and until you tell it to stop it, it will not stop it. Technically यहाँ पे हमें stop करने के लिए break statement का use करना होता है. Right? So it's called as break statement if you want to stop the while loop over here, right? So what I'm doing, I'm taking one variable. So example, इसको mark down कर लेते हैं quickly, and let me mark it as over here while loop. Enter. And in this case, what I want to run a while loop. And again, guys, if the while loop अगर condition true हो, तो it will run infinite time. So again, if it is running infinite time, you have to stop the kernel to stop it, right? आपको kernel को stop करना पड़ेगा, तब जाके while loop वहां पे stop होंगी. Otherwise, it will run till the time your RAM के ऊपर जितना space है, वो जब तक fill नहीं होता है, it will run infinite time in your system, right? So what I'm doing, I'm creating one variable here to stop the while loop. Maybe हम चाहते हैं ये 5 count करके stop हो जाए. So I'm telling while count is less than or equal to 5, run this while loop, right? What it will do, it will print the value of count, maybe count count. It will print the value of count, and this count will technically run it. और count की value पहले 1 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 5 होंगी. तो यहाँ पे हम इस count की value को initially 1 कर देते हैं. तो initially 1 काउंट करेगा, प्रिंट करेगा, और हम चाहते हैं काउंट की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाए, तो हम न्यू वैल्यू अपडेट कर देंगे. काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. दैट्स इट. So you can see 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, and 5 time. Unless and until that becomes 5,
it is not stopped over here in our case, right? Technically, we can check it over here. One simple project, one very amazing project I want to show you guys over here using while loop. तो हम क्या चाहते हैं guys? हम चाहते हैं एक password हमें in your laptop or in your mobile phones. You guys have seen it over here. So let me quickly zoom my screen. One second, just give me fix it. Yeah, it's now fine. So what I want, whatever password I'm entering, for example, I'm entering the password here as admin 123. अगर ये पासवर्ड कोई भी यूजर यूज करता है मोर देन 3 times, अगर तो it will automatically go and block it. If they enter incorrect password 3 times, it will automatically go and block it. If they enter the correct password less than 3 times, so again they will go and do something in my system. They got the access of my system. So something like this, I want to create it over here. So for this example, I'm creating one variable here. So password attempts quickly one kind of a project. So just give me a name. So I'm checking the password attempts. So my maybe correct password is maybe equal to admin 123, just like a variable I'm creating it. ये एक variable है, it is doing nothing over here. And one more variable I'm creating, guys, you can create it in the same cell, 2, 3 variables, or you can create it in different cells also. It doesn't make any difference. So I'm creating here attempt is equal to initially 0. So right, admin again string है double inverted commas, we have to create it in double inverted commas. So attempt here is 0, and अगर हम यहाँ पे while loop run कर देते हैं, while attempt is less than or equal to 3, so we will do something over here. So entered password is equal to maybe correct password. या हम यहाँ पे एक एंटर्ड पासवर्ड को ले लेते हैं, एंटर्ड पासवर्ड या एंटर पासवर्ड कर लेते हैं. एंटर्ड पासवर्ड नाम का एक सेम वेरिएबल हमने ऊपर भी क्रिएट किया था गाइस. सो दैट इज व्हाई दिस वेरिएबल इज कमिंग अप. सो इट्स ओके, वी आर ओवरराइडिंग द वैल्यू ऑफ इट. सो हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं यूजर से. इनपुट एंटर योर पासवर्ड, दैट्स इट. डबल एस WORD. So I'm just entering the password, taking the value of the password from the user. And if the password entered by user is correct, so I'm checking with a condition. So if entered password, entered pin is exactly equal to corrected pin. So again, we are storing it with integer. So हमें integer नहीं लेंगे guys. It's stored, password is string. So यहाँ पे हम string format में लेंगे. I've entered pin here, so it's okay. So enter your password. So it's is equal to correct pin. Then we will tell print login succeeded. Login success, right? Else यहाँ पे हम else block of code run कर देंगे और यहाँ पे हमारा while loop को stop करना रहा guys. So we have a one keyword called break keyword. What will happen? As soon as you enter a right password, you will be breaked over here. Else what we want to do it, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे else ब्लॉक ऑफ कोड कर देंगे. तो हमारा अटेम्प्ट जो वेरिएबल है उसको हम इंक्रीज कर देंगे एक जस्ट 1 वैल्यू से, ताकि हमारे अटेम्प्ट की जो वैल्यू है वो +1 हो जाए. राइट, अटेम्प्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 1 वेरिएबल से, 1 वैल्यू से. एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू क्विकली प्रिंट 1 स्टेटमेंट, wrong password entered, try again. That's it. So यहाँ पे हम रन कर रहे हैं while loop को. Enter your password. I'm entering the wrong password guys, 11111. So again wrong password, again enter again, 111 again entered, 111 again entered. So one last time, less than or equal to 3. Again I'm entering your password entered is wrong. You enter a right password. तो यहाँ पे 0 1 2 3 लगभग यहाँ पे 4 अटेम्प्ट मिल चुके हैं हमारे इस केस में हमें यहाँ पे. तो जैसे ही अगर आप राइट पासवर्ड एंटर करोगे, इवन दो इन जस्ट 1 केस यू एंटर अ राइट पासवर्ड. सो यहाँ पे पासवर्ड और व्हाइल लूप रन करते हैं. हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं अटेम्प्ट एंटर पासवर्ड. तो यहाँ पे हम पासवर्ड करेक्ट लिखते हैं admin 123. तो ये दैट इज लॉगिन सक्सेस. ओनली 1 टाइम व्हाइल लूप रन इट. राइट, तो ये व्हाइल लूप जब तक रन होगी जब तक आपका
पासवर्ड जो है वो 3 टाइम्स से लेस देन और इक्वल टू 3 है, राइट? मतलब 3 अटेम्प्ट देगा करेक्ट पासवर्ड एंटर करने के। अगर आपने 3 अटेम्प्ट में पासवर्ड करेक्ट एंटर कर दिया, देन योर लॉगिन इज सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ code will run it over here, right? Something like this over here in this case. One more small project in while loop I just want to show you quickly is like a counter. So एक stopwatch होती है, countdown timer, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, something like this counter I want to create it. So it's technically a counter we are creating using while loop. So I'm using counter timer as a name of the function, and this function I am taking maybe seconds as a variable. So कितने seconds का counter लेना है? So I'm telling 10 seconds का counter लेना है. So अगर 10 seconds का counter लेना है तो हम while loop को mention करेंगे. While loop, do one thing, whatever seconds we have it with us, अगर seconds की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होंगी 10 से, राइट? तो अभी हमारे केस में यहाँ पे सेकेंड्स 10 है, या हम इसको सेकेंड्स को 0 सेट कर देते हैं यहाँ पे, तो 0, 1, 2, 3, 4, या फिर रिवर्स करते हैं यहाँ पे 5 सेट कर देते हैं वैल्यू की। अगर इसकी वैल्यू 10 से कम हो तो ऑटोमेटिकली हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देंगे किसको? प्रिंट, मे बी आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सेकेंड, राइट? आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड आई वॉन्ट टू रिवर्स इट, मतलब 5 के बाद हम चाहते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज हो, 5, 4, 3, 2, 1 काउंटर, तो हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे वैल्यू को। लास्ट एग्जांपल में अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे हम अटेम्प्ट को इंक्रीज इसलिए कर रहे थे 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, राइट? सो यार इसको इक्वल टू लेस देन 3 कर देंगे तो इट विल बिकम मोर बेनिफिशियल। 3 से जब कम होगा 0, 1, 2, तभी जाके यूजर को इसको एक्सेस कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर काउंटर का देखें तो हम यहाँ पे पहले 1 था, 0 था, फिर 0 के बाद 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, तो इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को। यहाँ पे हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि हमें पहले 5, 4, 3, 2, 1 रिवर्स आना है, तो वैल्यू को काउंटर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दिस केस व्हाट आई वांट, व्हाटएवर सेकंड्स वी हैव स्टोर्ड इट, सो इस सेकंड्स की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे, किससे? -1 से। दैट्स इट गाइस। सो यू सी, अगर इसको रन करते हैं, why it is not running, 1 second. So while loop, while seconds is fine, so maybe यहाँ पे हम print कर लेते हैं एक और value, 1 second, while loop is not running here, while seconds is 5 is greater than or equal to 10, print the value of 5. Why it is not printing here? Second -1, maybe print, we can go and print launch, something like this. So क्या हो रहा है? launch हो रहा है। So while loop is not running, 1 minute, while second is greater than और sorry not greater than equal to 10, 0 कर लेते हैं। ये 5 है तो ये 10 से ज़रा नहीं है। अगर greater than equal to 0 है, right? So by chance 10 का रिवर्स हम उल्टा कर रहे थे, तो ये 5 कर देते, 5, 4, 3, 2, 1, 0 लॉन्च। लाइकवाइज रिवर्स हमने स्ट्रिंग कर दिया। अगर आप इसको सेकेंड को इनपुट कर लो, इनपुट अगेन इंटीजर क्लियर डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे इस फंक्शन का, राइट? एंटर योर टाइमर, दैट्स इट। तो एंटर योर टाइमर, आई वांट अ टाइमर फॉर 10 seconds, so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and launch. Just like a happy new year we had it, some kind of a birthday you guys have it, so multiple times we can do it over here in this case, right? One small task we guys can take it from my side, using while loop, you guys have to do is you have to create a multiplication table of mathematics using a while loop. So try to do this over here from our side in this case, okay? So just a quick things we have seen it over here in this case of our side. So multiple topics, multiple mini projects guys, we have seen it over here. Again is like a multiple kind of a mini minor projects we have seen it, and some basics of Python yesterday and today we have seen it. From tomorrow onwards we are going to go and see it in the more deep dive over here, okay? So that's it for my side for the second day over here, right? I hope you guys enjoyed the second day, and any questions you guys have it, you guys can ask us in the live chat over here.
So those who are belonging on the YouTube, guys can quickly join it into the live chat. So can you please share me a live chat here. So whatever questions anybody has it, make sure you guys add it in the live chat. Live chat is open. Please, any questions over here? Jatin, live chat is active now. You can ask whatever questions you have it with us. I'm able to access the live chat here. So any questions from online guys, those who are attending live, make sure you guys ask me in the live chat here. I hope you guys have enjoyed this particular topic. Again, many minor project I use it to explain the topic instead of proceeding it with multiple typical topics. So Blast Bob is asking me, sir, tell the best stack for software development for freshers. Again, the person who's asking me in the chat box, Mern stack is any which way is good and better. You guys can go and do the Mern stack over there for software development. Even though we can use Python also as a backend language, so Python full stack development also you guys can proceed it over there, right? Then today we learned conditional statement, if else, while loop, nested project like calculator, ATM, etc. Yes, definitely. Uh, with Bhavya, you are is visible over here. Again, many domains, guys. Even though you are doing data science, machine learning, Merge stack for everyone, you guys can go and learn Python somewhere or the other. The Python use case is very much required in those industries also. If you have extra knowledge, again, will give you a lot of extra advantages in the near future. Okay, so attendance, to mark your attendance, guys, make sure you put your comment here and in the live chat whatever your experience was, whatever you have learned today, and take a screenshot of it and check your group descriptions of your WhatsApp. In the WhatsApp group description, we have marked your, like, we have pinned your group attendance form, so guys can go and check it over there in the group description. Fill it, day 2 attendance, you guys can go and mark it over there. Guys, anything if you want to ask it, you guys can ask me in the chat box also. Roadmap for data analytics, Yash Kumar. Again, any of the technology you want to go forward, like Python, which is technical data science, you want to go for machine learning or generative AI. The main and core programming language we use it over there is Python as a programming language over here. So again, Python, start from Python, and then you can go for multiple different libraries of data analytics where you can use scikit-learns, pandas, numpys, tons of other different libraries. We do it over there. So again, start from Python, then go for different libraries in Python where you have learned it. So today we learn about the conditional statement. Again, very informative and engaging. Again, thank you so much, Srijan Paul, for your valuable words. I hope guys you are enjoying the project-based learning. Very best course. Thank you so much from IITians. Somebody vibe with IITians. Again, form is opening. Guys, please check it. My others are able to fill it. So guys, today we learn about, guys, instead of mentioning what you learned today, just write a quick detailed comment about whatever you have learned. How was your experience during the session, and what topics you have learned it. So don't just mention the topics. Please mention about your experience also over here. Again, Priyanshi Singh, thank you so much for your valuable word. Yash Kumar, thank you so much, guys. Patel, you can have attendance. Write your feedback about how you experience it here and about the project, like what topics we have covered it, and take a screenshot of it and post it on the form. The form is available, uploaded in the form. The form is available in your WhatsApp group description. You guys can go and check it.
Today's lecture was so much good and it was clear very of my doubts. Thank you so much. Aman Ras, thank you for your valuable words. Attendance forms is available, guys. You have the time of around 45 minutes. You guys can go and fill the form and will get this code available over there. So will this attendance will be marked? You guys have 30 minutes. So when multiple students are doing it, guys, at that time, this is causing a challenge. But don't worry, you guys can fill it. You have a time here of till 7 p.m. Before 7 p.m. will my team will close the form entry. So make sure you add the form properly over there. So I open the form from the group chat. Purvika, it's available. Please check it. Thank you so much for this kind of project. Again, Ajit, it will be always a small projects followed with multiple different examples. So it's a project-based training. We'll see multiple different projects over here. Slowly, we guys will go and see tons more other thing, guys. You don't have to worry about it. So guys, I have pushed the code on my GitHub repository. You guys can go and visit my GitHub. You will get this code available on the GitHub. So for this, let me quickly share the QR code. So this is publicly available. Those who want to get this same code which you are practicing in the class, so can scan this QR code and will get the entire part of it. Like the entire repository will be able to give it code. We will get it over here. यस सेम फॉर्म ओनली गाइज यू हैव टू फॉलो इट उसी फॉर्म में एडिट करना है वापस एंट्री को और उसी फॉर्म के अंदर आपको सेकेंड डे की अटेंडेंस भी मार्क करनी है तो सेम फॉर्म टिल दैट ऑल द 10th days is available over here. Again, one more thing, guys. Whatever you have learned it in the past day one and day two, you guys can post it on LinkedIn, and it's like about your journey. And whatever you have felt it, you guys can post it over there. And make sure you add the proper tag us, tag Linux World. You guys can tag Vimal sir. You guys can tag me. So whatever you have learned in just day one and day two, it's always to share with others. It's always good to share with others. So you guys can share with your friends. You guys can share it on LinkedIn about your learning, whatever projects we are building it. Again, it will also be great for the recruiters. They will go and see your entire part over here. So that's it for my side for the day, guys. Thank you everyone for joining. Have a great day and see you guys in the next session. So tomorrow at the same time at 4:15, we'll come back and we'll see some more amazing thing in Python. That's it from our side, guys. Thank you everyone for joining. Have a great day and see you in the next session. Make sure, guys, you mark your attendance over here. Okay. Yes, definitely, Himanshu. There will be multiple major projects also. You don't have to worry about it. We'll be having multiple different major projects in the upcoming days. राहु साहब आप सेम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो सेम फॉर्म इज विजिबल राइट सो सेम यू कैन हैव अ सेम फॉर्म and the same form you can go and edit it over here. एडिट करना दिव्या उसी फॉर्म को एडिट करना डे 2 का ऑप्शन उसमें ऐड हो चुका है आपको अवेलेबल रहेगा एक न्यू एंट्री ऑफ डे 2 ओवर देयर इन द सेम फॉर्म. Okay, so that's it, guys. Thank you everyone for your kind words. Thank you so much everyone for your
words, valuable words here. So that's it, guys, from my side. See you in the next session. Bye, take care, and good day, everyone, from our side. Okay. And humble request, can share with your friends who can benefit from this entire training which we are offering it here. So that's it. Thank you for joining. See you tomorrow at sharp 4:15 p.m., guys. Bye, take care, and good day, everyone.